कहितली ना कहनतली व्हाट इज एटम Smallest particle of an element which may or may not have very independent good existence. atom is the smallest particle of an element atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element which may or may not have independent existence. Have independent existence. Okay, which may or may not have independent existence. For example, H2, H2O2 have N2. do not have independent existence. So the atom is H. H2 is the molecule. Atom is H, O, N, A, Fe, etc. Okay, these are the atom. Clear about the atom and what is atom? How it's come by the conceptual method. केमती एटा की आसीला हला ए धारणा केमती आसीला many years ago our Indian philosopher कोणाद सुनिଛ कोणाद ना सुनिଛ सुनी ना हला he says that every substance or matter consisting with a small particle that is called परमाणु. Okay, he is the philosopher. से ଗୋଟେ कोन थिले फिलोसोफर थिले एवं से कहिथिले जे प्रत्येक पदार्थ किछि किछि छोट छोट कणिका को लेकी गठित जेबे को परमाणु बोली कहिथिले our Indian philosopher. But near about 440 BC, mean before Christ, Democritus is the Greek philosopher. He is philosopher thile. He also said that every matters are consisting with the smallest particle which held together by a force of attraction. माने सबु कणिका गुड़िक सबु पदार्थ छोट छोट कणिका को नहीं गठित एवं सेमान भितर गोटे कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि जहा पर से बांधी की रहि छथि ए कथा के कहले डेमोक्रिटस एंड ही नेम्ड एज एटम से ही प्रथमे एटम नाम करथिले. एटम मीन इट इज ए ग्रीक वर्ड हला एटम इज ए ग्रीक वर्ड. एटम इज ए ग्रीक वर्ड whose mean is indivisible. Indivisible. Named by the Democrats. Okay. But in first century of 1800, in 1803, John Dalton gives some characteristics or postulates of the atoms, which is called Dalton atomic theory. Actually, it is revised syllabus में भारी इसी ମୁଁ ଖାଲି କହି ଦଉଛୁ ତୁମକୁ ରିକଲ୍ କରିଦଉଛୁ you have already written your class 9 ପଢିଥିବ ଏ କଥାଟାକୁ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆଟମିକ୍ ଥିଓରି. ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆଟମିକ୍ ଥିଓରି ଶୁଣିଛ କି ରେ ଡାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛ କି ରେ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆଟମିକ୍ ଥିଓରି এটা তো তোমার রিভাইজ সিলেবাস ରୁ পড়িছি কিন্তু ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନା ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆଟମିକ୍ ଥିଓରି कोन करे कोन मजा କଥା पड़ी गला की हेलो डाल्टन एटॉमिक थियोरी John Dalton in 1803 gives some characteristics or postulate about the atoms that is called Dalton atomic theory. First he says that atom is the smallest and indivisible particle of an element. Atom होतो सबुठु छोट एवं indivisible particle.
Again, atom is the smallest and indivisible particle of an element. Particle of an element. Clear? Second things, atoms neither created nor destroyed during chemical reaction. यदि कौन से केमिकल रिएक्शन चली तो जहाँ आटम अच्छी एपटे आगपटे भी सही आटम रही नहीं कि आटम के उड़ी पड़े जीवन कि उड़ी पड़ी आसबनी. Atoms neither created nor destroyed during atoms are neither created nor destroyed during chemical reaction. Atoms are neither created nor destroyed during chemical reaction. Clear? Second point. Third point. Atoms of same elements are same in all respect. Mean गोटे एलिमेंट रो जते गुडे एटम आनिबा से माने सबु दृष्टि सेम हेतिए बोली की कहिथि डाल्टन कहितले सेते बेले. ओके माने गोटे आयरन रो पांचटा एलिमेंट एटम आनिबा तो पांचटा को एटम सबु दुता मास भी सेम हेतिबो से मानकर रेडियस भी सेम हेतिबो आकार भी सेम साइज सबु जिंस सेम होबा दरकार बोली से कहिथले के डाल्टन. तो आगे डेट देखते कि एटम अछि जेटा आइसोटोप कहउछ सेम एलिमेंट रो हेतिले भी से मानकर मास नंबर डिफरेंट आसी छि. और एक कथा अनुसार कोन दिला atoms of same element are same in all respect. Atoms of same elements are same in all respect. सेमते कहबा atoms of different element. Atoms of different element are different in all respect. The different element माने से माने कोन होबा जरूरी से मानकर प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होबा दरकार हैला. डिफरेंट एलिमेंट रो एटम डिफरेंट इन ऑल सब दृष्टि से मानकर शेप साइज मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसी नथला ये एटम इज द से कोन कहते स्मॉलेस्ट पार्टिकल ता भितर किछ नथिला. Then when atoms combine with a simple whole number ratio then it form a compound. से कहतले एटम गुड को जते सिंपल रेशियो रे कोन करथि मिसुतले से गोटे कंपाउंड दउतले हला कंपाउंड सृष्टि होय जेतु. when atom combine with a simple whole number ratio when atoms combine with a simple whole number ratio then compound is formed. Compound के फॉर्म लेते हैं. क्लियर?
An atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. Atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. These are the Dalton atomic theory. Then after that it can be modified or undergoes the limitation because atom is not the smallest particle. There is some subatomic particle like electron, proton, neutron present inside the atom. বুঝিপাচ্ছ তো? বুঝিপাচ্ছ তো? Means atom is not the smallest particle. Nowadays there is some subatomic particles present inside the atom like electron, proton, neutron, etc. etc. An atom neither created nor destroyed during chemical reaction, but nowadays in nuclear reaction, the atom can destroy. Atom can destroy, but in nuclear reaction, atoms of same element are same in all respect to length. जो आज का डेट रे जब आइसोटोप कथा में आलोचना करिबो आइसोटोप रे कोन हुए atoms of different element shows the same same element show the different mass number, that is called isotope. The same atom carbon अछि carbon रे 12 भी अछि carbon रे 14 भी अछि same atom but different mass number. According to Dalton कोन कहैतला same atom means are same in all respect. Atoms of different element are different in all respect, but nowadays argon has mass number 40, calcium also has mass number 40. Different atom but same mass number. This is not thela. Okay. Then when they combine with simple ratios, so it is simple ratio. So आमे जदि देखिबा सुक्रोज चीनी जो फॉर्मूला कहबे रे चीनी C12 H22O11. They do not have any simple ratio. That is simple ratio देखा होची की C12 H22O11. These are the compound which do not have simple ratio. These are the limitation of Dalton atomic theory. बुझिएला एबे जिबा सिंबल सर जे थॉमसन डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिबा इलेक्ट्रॉन कथा जिबा हला नेक्स्ट चैप्टर को जे थॉमसन कथा कहबा सर एट द आहुरी के जोर भाग पठले ना रदरफोर्ड नाम सी एटॉमिक स्ट्रक्चर से एटॉम बाबत रे पढिया भाई रदरफोर्ड बाबत ले कोर्स कइतले जे थॉमसन कर्स्टाइन बहुत किछि दिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर करथिले हला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढिबो से समय पढिबो हला एबे कोन जानता कोन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बुझिला तो एबे पढिबो सिंबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल बुझि पछे कि सिंबल कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल can you say the symbol of iron Fe Fe good and symbol means usually first Dalton gives the some pictorial symbol hela but laterally Berzelius hela give the shorthand representation of an element. The shorthand representation of an element. Shorthand representation of an element are called what? Which are called what? Symbol. Okay. A symbol can represent with one or two letters. A symbol can represent with
one or two letter. First letter should be capital and second letter should be small. Hello. First letter should be capital. Capital. Second letter, if any second letter should be small. Second letter should be small. Should be small. Some of symbol comes from the first letter of their name. Like this symbol ki their first letter was just like the hydrogen H, nitrogen N, oxygen O, etc. And some of symbol comes from the first two letter, like calcium, like beryllium, like neon, the first two letter. And some of the symbol comes from the first and third letter, like magnesium, Mg. Okay. And some of the symbol comes from their Latin name, like potassium. What is the symbol of potassium? K. Mean kalium. Its Latin name is kalium. To avoid the repeated of the letter. Okay. Because P is the phosphorus, so we use the Latin name, like kalium. Sodium, Na. Natrium. The lead, plumbum, Pb. Okay. Gold, arum, Au. Silver, argentinium, Ag. Mercury, hydrocarbon, Hg. Another comes from the Latin name. Some symbols, your name comes from the element discovered in their country, like francium, Fa, indium, In. Okay, according to the country, these are the symbol. Clear? Then we go to molecule. Apna me ka bujiba? Molecule. Molecule. Molecule mean? It is the smallest particle of an element or compound which is capable of independent existence. Very good. Sit down. It is the smallest particle of an element. Smallest particle of an element or compound. Element or compound which have independent existence. Independent existence. It is two type. It is two type. One is homoatomic molecule. Homoatomic molecule. Second one होची heteroatomic molecule. Heteroatomic molecule. Heteroatomic molecule. Eta homoatomic molecule और eta कौन? Heteroatomic molecule. Homoatomic molecule का कहवा? When the molecule which consisting or contain the similar atom, okay, is formed with the
similar atom, like example like N2, O2, O3. O3 is the molecule of death. O3 is the molecule of O3 is the molecule of oxygen, no ozone. O2 is the oxygen. Okay, N2, O2, H2, Br2, etc. These are the homoatomic molecule. Heteroatomic molecule means that is the smallest particle of a compound. Like it is the smallest particle of a compound. Smallest particle of an compound which have independent existence. Compound. Okay. Compound will like H2O, water, CO2. Can you say the name of CO2? Carbon dioxide. Carbon dioxide. CO. Carbon Carbon oxide. monoxide. So, what is the difference between CO and CO? These are the same thing or any different? Yes, Ajay. कई बार होगी कई पिलाने CO carbon monoxide ये CO cobalt. So the O always written in capital or small form. If you carbon monoxide then you write that like that. This is the totally wrong. बुझी पाते तो कौन कता different ऐसे वाला. This is the carbon monoxide but this is the cobalt. CO sulfuric acid H2 SO4 sodium carbonate Na2 CO3 etc. Okay, बुझिएला molecule means the smallest particle which have independent existence. Therefore, independent existence such that means the smallest particle of an element or a compound. Now we read about the atomicity. Atomicity. कौन पढ़िबा? Atomicity. परमाणुकता. ओडियाटा कष्ट लगतो नहीं? Atomicity. Number of atom present in a molecule are called what? Are called atomicity. Are called atomicity. Suppose, can you say what is the atomicity of water molecule? Atomicity of water molecule. Can you say? Water molecule. Can you say? H2O. But number of atom equal to this. In case of H2O, how many number of hydrogen atom? 2. How many number of oxygen atom? 1. So total number is 2 plus 1 3. Diatomic. Not diatomic. That is the atomicity is 3 because number of atom is 3. 2 number of H2. 1 number of oxygen. So the total number is what? 3. So atomicity is equal to kate? 3. Atomicity of sodium carbonate. Atomicity of sodium carbonate means Na2 CO3. Can you say? 2 number of Na plus 1 number of 2 number of Na plus 1 number of carbon plus 3 number of oxygen. So total atomicity is what?
about 5. It is CO, means C is the one atom, oxygen is the another atom. এটি কার্বন গুটে আছে, অক্সিজেন তিনটা আছে, বুঝি পাচ্ছ তো? নাইট্রোজেন সরি সোডিয়াম কতটা আছে? দুইটা আছে, তাহলে টোটাল কতটা আটম আছে? 6টা। সো অ্যাটমিসিটি ইজ 6। বুঝি পাচ্ছ তো পিলাମାନେ? কই পারিব অ্যাটমিসিটি অফ স্লাগ লাইম সমিত চূর্ণ। Can you say what is the formula of slag lime? CaO is equal to slag lime, calcium hydroxide. Chemical name is calcium hydroxide and a common name is slag lime. Can you say what is the atomicity? Atomicity of slag lime is CaOH all 2. Can you say? 6. ನೋಡಿ very difficult. 1 number of calcium molecule, 2 number of oxygen, 2 number of hydrogen, so total number is 5. Atomicity is 5. Atomicity of aluminum sulfate. Can you say what is the formula of aluminum sulfate? Sulfate. Aluminum is the Al, sulfate is SO4. aluminum का वैलेंसी 3 plus 3 प्लस SO4 का वैलेंसी 2 माइनस मीन यार वैलेंसी कितने 3 यार वैलेंसी कितने 2 then when criss cross then what will happen Al2 SO4 whole 3 कोई भी फॉर्मूला का कोई भी ठीक है दोस्त जरा चलो कौन है वो number what is the atomicity of Al2SO4 whole 3 aluminum sulfate हवा no sir 9 17 ये एग्जाम मतलब डरिया पड़ी पूरा चोट ना बता नाम 17 2 number of aluminum plus 3 number of sulfur plus 12 number of oxygen, there is 4 into 3 12, so total is 17. clear about atomicity ना बुझिए लनी हो बुझी पल्ला तो so जीवा नेक्स्ट जीवा वैलेंसी ओके वैलेंसी जानला पर पड़िबा फार्मूला केमते लिखिबा नाकि बुझियला तो एटॉमिसिटी ना बुझियनी वैलेंसी वैलेंसी যোজ্যতা तो कैन से कोई परिवार की যোজ্যতা कौन तो कैन से व्हाट इज द वैलेंसी very simply definition the combining capacity of an element the combining capacity of an element are called combining capacity of an element are called what are called valency combining capacity of an element are called valency that is the very simple definition or very clear definition the number of electron loads or gain the number of electron loads or gain or share to get stable electronic configuration to get
stable electronic configuration to get stable electronic configuration of nearest inert gas are called what? Are called valency. बुझिएला गोटे डेफिनेशन को कंबाइनिंग कैपेसिटी के केते के मॉलिक्यूल केतरा हाइड्रोजन सहित या केतरा ऑक्सीजन सहित या केतरा क्लोरीन सहित से कंबाइन करि पाछ ओके जेतरा हाइड्रोजन सहित कंबाइन करछु सेतार वैलेंसी होछु सेतिकी सपोज CH4 तन कार्बोनेट केतरा हाइड्रोजन सहित कंबाइन कला चारटा छ कार्बन रो वैलेंसी हम कहि परबा चार हला H2O सेठी ऑक्सीजन केतरा ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन सहित वैलेंसी कंबाइन कला दीटा तो हाइड्रोजन रो वैलेंसी हला 2 हला ओकमे मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम केतना क्लोरीन सहित करछि ना दीटा सेतले मैग्नीशियम रो वैलेंसी 2 किंतु जतरा ऑक्सीजन मिसबो तार डबल नंबर यदि MgO गुटे मिसि तार 2 जो दुइटा ऑक्सीजन के अछि सेट तार वैलेंसी केते 4 ये जला अकॉर्डिंग टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट हमें से पैरामीटर होछि काहको हाइड्रोजन क्लोरीन या ऑक्सीजन जतरा हाइड्रोजन जतरा क्लोरीन सहित मिसि सेतिकी और जतिटा ऑक्सीजन सहित मिसि तार इनटू 2 एठी केला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज or gain or share to get stable electronic configuration of nearest inert gas mean inert gas माने सबुले stable थान because they have stable electronic configuration inert gas को noble gas कोनती rare gas कोनती zero group element कोनती inert gas के माने जानछो नीना और करीना इसने रंगीन नीना और करीना एक्सरे रंगीन हला जे तो सेवन सब हीरोइन तकर एक्सरे वासिवन व्हाइट रे हला मीन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन एमाने सब हला इनर्ट गैस दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन से माने स्टेबल इनर्ट दे डोंट रिएक्ट विथ अदर एटम्स हला मीन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल तकर बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन अछि 8 इलेक्ट्रॉन अछि एक्सेप्ट हीलियम दे हैव द ऑक्टेट स्टेट से पे समान स्टेबल तो ताहारी भलिया हेबा पई आउ जण को जतिकिटा इलेक्ट्रॉन लूज करबा पड़े किबा गेन करबा को पड़े किबा शेयर करबा पड़े तर Na+ हमें को मीन कोन से 1 इलेक्ट्रॉन लूज टू गेट ऑक्टेट स्टेट तार होई परबो कि सोडियम रा एटॉमिक नंबर मीन तार सीरियल जदि हाइड्रोजन 30 तक सिकिछ सब 11 very good number of electron 11 so its configuration is 281 in first cell 2 second cell 8 third cell 1 valency electron is 1 okay so it had to lose आपको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करिया पड़िबो गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर देले से ऑक्टेट स्टेट पाइबो दैट्स व्हाई इट रिटन एज द Na+ जे तो गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करला पर गोटे प्रोटॉन अधिक जाय से पे चार्ज ना कोन Na+ mean valence is 1 Ca2+ mean valence is 2 because it lose 2 electron. If Al3+ लिखा है mean valence is 3 because it lose 3 electron. O2- mean valence is 2 because it gain 2 electron. Dita electron gain करछि stable है. Sulfate SO4 mean कौन करछि dita electron gain करछि so valence is 2. Clear? You have to know about the valency. There is also variable valency. Variable valency. In some atoms shows more than one valency. किछि atom अछंती सेने more than one valency शो करंती तबे सुनथिबो ferric oxide ferrous oxide माने iron has 2 valency 2 + 2 + 3. This valency are called what? Variable valency like copper iron some element so more than one valency more than one valency more than one
valency, which is called variable valency, which is called what? Which is called variable valency. सेटा को कौन कहबा? Variable valency कहबा. Clear? Example iron, copper, etc. प्रायः डी ब्लॉक एलिमेंट गुडी को जे जे तमर कोन वेरिएबल वैलेंसी शो करते. तापर पड़िबा आयन. आयन or radical. Can you say what is iron? Can you give me example of iron? Iron रो example दे परिबो. ठीक अछि. को सुनि से नहीं. आयन रो example आज का डेट में बहुत बड़े दे गेलनी Na+. This is the iron. Cl- is the iron. When an atom or a group of atom, when an atom or group of when an atom or group of atom when an atom or group of atom carried a charge is called what? Ion or radical. If it polyatomic ion then more than one ion, then that is called radical. There are two type of ions. There are two type of ion. One is positive ion or called cation or basic radical or called what? Basic radical. Another one is negative ion or anion or acid radical. Okay, according to charge is two type. According to unit of charge. Suppose a charge carrying 1 unit positive or negative charge, that is called monovalent. Man Na+, Cl- these are the monovalent. The bivalent or trivalent means they have the 2 unit of positive charge and negative charge. They have 2 plus wala सब असले. Mg 2 plus here 2 plus like that. There are the bivalent, trivalent, tetravalent. यदि बहुत गुडा आयन अछि म आज तुमको पठै देबी ग्रुप रे हला यदि न पठै दिमे रात मते मन पके दबो ग्रुप रे पठै देबे तो से आयन सिखले जाके फार्मूला लिखिबो फार्मूला लिखि पाइले जे मॉलिक्यूलर मास बाहर कर परिबो मॉलिक्यूलर मास बाहर कर पाइले जे आ सब पाठ कर परिबो मोर कॉन्सेप्ट जहा जहा पाठ रे अछि यदि तुमे फार्मूला लिखि परिबोनी देन किछि पाठ भी करि परिबो नाही. So you have to remember these are the knowledge part. ई पाठटा कोन जो सिंबल एलिमेंट जति एबीसीडी होची इंग्लिश रो नॉलेज पार्ट. विदाउट एबीसीडी व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज. एबीसीडी न सिखी इंग्लिश लैंग्वेज देखबा जा तमे केबे तेलुगु फिल्म देखछे की लेक्चर देखि जो खाली इते ना बुझी पारू खाली दिनती देखू सेति पाठ लागबो केमिस्ट्री लागबो जदि हमें आयन की आटम रो सिंबल एवडा सब हमें न जानिबो तो हम केमिस्ट्री पाठटा तेलुगु फिल्म देखला भले लागबो हला. तेलुगु फिल्म अगर बसिले जति बहुत मजा आसबो एठबी ठीक से मजा पाउते केला माने जदि न सिखिबो तो सेति में निहाती सिखबा जरूरी बहुत गुडे अछि. कम से कम गुटे आज मोनोवेलेंट गुडा सिखिबा काली की बाइवेलेंट गुडा सिखिबा काली ट्राइवेलेंट गुडा सिखिबा. मोनोवेलेंट बाइवेलेंट के अधिक नंबर रे अछि हला. तो ट्राई टू रिमेंबर दैट आज पठे देबी तुम ग्रुप रे त लिस्टटा टोटल लिस्टटा पठे देबी हला.
बुझिगल आयन कोन एबे पडिबा फार्मूला बुझिगल कोन फार्मूला shorthand representation of a molecule molecule को when a molecule represent with help of symbol molecule टा को हम symbol द्वारा जदी represent करि पालु वे वाटर लिखिबो कि तेतिरा नेतिबा कोन एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O करके लिखिबो माने symbolical representation आर कॉल्ड व्हाट फार्मूला and a molecule represent with help of symbol when a molecule represent with help of symbol with help of symbol are called what are called formula এটা তো আমি কোন কইছো ফর্মুলা কইছো ফর एग्जांपल water H2O carbon dioxide CO2 glucose C6H12O6 these are the formula. But how to write the formula of an ionic compound? Ionic compound मानकर formula में केमिति लिखिबा ओके लिखि जता then how to write कना formula of ionic compound how to write the formula of ionic compound organic chapter रे पढिबा ionic compound an ionic compound has two radical one is basic radical another one is acid radical suppose sodium carbonate sodium is the basic radical carbonate is the acid radical sodium calcium phosphate calcium is the basic radical phosphate is the kona acid radical each ionic compound has two type H2 radical H2 radical okay so first you should write basic radical first then it followed by acid radical clear you write the symbol of basic radical first then acid radical basic radical first then the symbol of acid radical symbol of acid radical तापर तुम acid radical टा लिखो okay then enclose the polyatomic radical with bracket if any it optional case जदि तार भितरे कोनोसी polyatomic radical थोड़ा calcium hydroxide calcium is the Ca only one atom but hydroxide OH this is the polyatomic mean more than one atom poly mean many so it should be enclosed with bracket eta कोन करिवार अछि bracket करिवार अछि हला enclose the polyatomic ion enclosed with bracket enclosed with bracket to
polyatomic ion इथेन जदि थिबो तो करिवो नथिबो तो नाही polyatomic ion इथेन जदि कोनसी polyatomic ion अछि ताको कोन कर दबा ब्रैकेट रे एनक्लोज कर दबा then write the valency at the top of each radical. Write the valency at the top of each radical. Each valence of each radical. Write the valency at the top of each radical. Okay, then minimize the valency by dividing common factor if any. It is optional. हला जदि किछि कॉमन अछि धर मैग्नीशियम रे 2 ऑक्सीजन ले भी 2 माने 2 2 कटि आउछि हला तन कोछि minimize the valency by dividing common factor by dividing common factor if any जदि थिबो डिवाइड करबो जदि कॉमन फैक्टर नाही तो डिवाइड करबार नाही then last step finally crisscross the valence crisscross the valency finally कोन करबो वैलेंस का क्रिस क्रॉस कर दो यार वैलेंसी या पाद तले पके दो ताको ता पाद तले पके दो बुझियला हम किछि एग्जांपल लबा ओके लिखौची suppose we write the formula of sodium chloride formula sodium chloride. It has two radical. Can you say which one is basic radical, which one is acid radical? Basic radical is sodium, acid radical is chloride. तने हमको कहाँ पर आगे लिखना है अच्छी basic radical को mean Na. Then symbol of chloride Cl. Chloride, chlorate difference हो अच्छी. तो सुनते हो chloride. Then there is no polyatomic. अगर polyatomic की अच्छा दिखी तारे ब्रैकेट दबारा स्टेप ओमिक सेकंड स्टेप ओमिक थर्ड स्टेप वैलेंस लिखवा एयर वैलेंस केते 1 एयर वैलेंस केते 1 किछि कोटिबार नै क्रिस क्रॉस कर देले भी से केते रहला NaCl जदि हम लिखुचे सोडियम कार्बोनेट the basic radical is what is sodium in Na. Acid radical is carbonate. Can you say what is the carbonate? CO3. Good, very good. CO3. Sodium valency 1. Then it enclosed with bracket. Then valence kete 1. Here valence kete 2. Then criss cross कर देले Na2 एठी 1 असला ब्रैकेट दरकार होनी. So Na2CO3. Suppose write the formula of calcium phosphate.
सल्फेट बेसिक रेडिकल कैल्शियम एसिड रेडिकल फॉस्फेट कैल्शियम का सिंबल Ca फॉस्फेट SO फॉस्फेट फास्फोरस हां PH PO4 3 माइनस এটা PO4 তো ভ্যালেন্সি আর কত 2 ইয়ার ভ্যালেন্সি 3 এটা পলি আটম আছে ব্র্যাকেট রইব হলা ই আসিব ঠিকই ই আসিব ঠিকই তাহলে কোন হলা Ca3 PO4 all 2 বুঝিস তো সেমতি মতে লেখবার আছে সপোজ पोटासियम क्लोरेट सियम क्लोरेट पोटासियम वैलेंसी को व्हाट है के क्लोरेट रे कोई परिबे की ClO3 ClO3 here we 1 that's why KClO3 ओके बताइए कोई परिबो एमोनियम सल्फेट एमोनियम सल्फेट एमोनिया इज द केमिस्ट्री बट एमोनियम इज द केमिस्ट्री बेसिक रेडिकल इज एमोनियम एसिड रेडिकल इज सल्फेट okay so ammonium mean NH4 sulfate mean SO4 both are enclosed with bracket इसका वैलेंसी 1 उसका 2 किसी कोटो चुकी तो नहीं असले NH4 whole 2 NH4 whole 2 SO4 ammonium sulfate क्लियर है पढ़ी नहीं